May I request everyone to please settle down, take your seats, and also please ensure your mobiles on silent mode as we should be starting very, very shortly. May I request everyone to please rise and join us welcome our chief guest. Please join us welcome our chief guest, ladies and gentlemen, Honorable Union Minister of Finance and Corporate Affairs, Government of India, Srimati Nirmala Sitharaman. Welcome, ma'am. May I request all our dignitaries to please join us on the dais. Can we all take our seats, please? A very good evening, ladies and gentlemen. It gives me great pleasure to welcome you all to this special event, the National MSME Cluster Outreach Program, organized by the Small Industries Development Bank of India, or SIDBI, jointly with the Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India. Before we proceed further, may I request everyone to please rise for the Nadagite, the Karnataka state song. Thank you, everyone. The goal of today's program is to build a sustainable, collaborative environment that supports MSMEs in their growth, ambitions, and contributes to nation building. This venue, the SV Narasaya Auditorium at Indian Institute of Science, is dedicated to the founder and chairman of Hind High Vacuum Company Private Limited, the first commercial vacuum technology company established in India at a time when the country was struggling for self-reliance. Before we proceed, we shall now take a moment to recognize and welcome the esteemed dignitaries who are here with us today. We are honored to have with us, ladies and gentlemen, Srimati Nirmala Sitharaman, Honorable Union Minister of Finance and Corporate Affairs, Government of India. A warm welcome to you, ma'am. Thank you so much for being here with us today.
May I invite Sri M.G. Rajagopal, President KASIA, the Karnataka Small Scale Industries Association, to please felicitate Madam. We extend a warm welcome to Sri Jitan Ram Majhi, Honorable Union Minister for MSME, Government of India, who is virtually present with us. May I request Sri Praveen Raghavendra, DMD SBI, to please felicitate him. Can we have the video, please? Welcome, sir. Thank you for joining us. We have with us Sri Pankaj Chaudhary, Honorable Union Minister of State for Finance, Government of India. May I invite Sri M.G. Rajagopal, President KASIA, to please felicitate him. A very warm welcome to Sushri Shobha Karandlaje, Honorable Union Minister of State for MSME, Government of India. May I invite Sri Ganesh Rao, Vice President KASIA, to please felicitate. Please join us welcoming Sri Nagaraju Madirala, Secretary DFS, Ministry of Finance, Government of India. May I once again invite Sri Ganesh Rao to please felicitate. We also extend a warm welcome to Sri Manoj Mittal, CMD SIDBI, Sri K. Satyanarayan Raju, MD and CEO Canara Bank, and Srimati Mani Mekhalai, MD and CEO Union Bank of India, Mr. KV Shaji, Chairman NABARD, Shantilal Jain, Managing Director Indian Bank. Warm welcome to all of you. We also welcome all dignitaries virtually connected with us all over. We have Sri C.S. Shetty, Chairman State Bank of India, MDs and CEOs of Punjab National Bank, Bank of Baroda, Central Bank of India, and EDs of other banks. Thank you so much, everyone, for joining us. Today's agenda is going to be action-packed. I'm very pleased to inform you all that during today's program, Honorable Finance Minister will interact with some of the MSME entrepreneurs present here and also with some of the representatives from the 150 plus MSME clusters virtually connected with us all across the country. Further, we are going to witness the inauguration of new branch offices of SIDBI, Union Bank of India, the Learning Center of Canara Bank, exchange of MOU between SIDBI and Pina Industries Association, and distribution of sanction letters to some of the MSME customers of Canara Bank, SIDBI and Union Bank of India. I would now invite Sri Nagaraju Madirala, Secretary DFS, to set the context of today's National MSME Cluster Outreach Program. Let's hear from him. That one. Good afternoon, everyone. I will be, if you all excuse, I will be speaking in English so that my Hindi is very poor. I can't speak. So, better I think, hope well. Honorable Minister, Minister of Finance, Madam Nirmala Sitharaman, Honorable Union Minister for MSME, Sri Jitan Ram Manji ji,
Honorable Minister of State for Finance, Sri Pankaj Chaudhary, Honorable Minister of State for MSME, Srimati Shobha Karanjalaje, and all my colleagues from the Ministry of Finance, Department of Financial Services, and CEOs of banks, all the entrepreneurs who have joined us kindly by sparing your time, media, and also all the several entrepreneurs, small entrepreneurs, businessmen who have joined us from 150 cluster places all over the country, along with bank CEOs, MDs, executive directors, and other senior officers. We all welcome to you, all of you. You know, today is a very important day for the country, in the sense that Honorable Finance Minister has been emphasizing the priority of lending and holding, guiding MSMEs in the country, so that they will be able to contribute to the growth and development of the country. Karnataka is one of the very more or less developing state with a very robust MSME ecosystem, and a lot of industries apart from the IT. And Bangalore, we are very close to Bangalore, and Bangalore is known for IT, established IT infrastructure and also innovations. We are very fortunate today. You know, MSME contributes about 30% of the GDP and 41% of manufacturing and 46% of country's exports. We still want, we have great potential to both in exports and also contribution to GDP from the MSME sector. Given the size of our own country, number of population, and the level of education we have, expertise we have, MSME should be actually contributing much more. But nevertheless, we are on the way to contribute. And you know, this is the second largest sector contributing employment apart from agriculture. MSME is the only. Now, we have about 540 lakh registered MSMEs in the country. And Karnataka ranks number 5th in the country with the number of MSMEs registered with 35.5 lakh MSMEs. Now, India is, I think all of you are aware, Honorable Prime Minister's vision to Viksit Bharat by 2047, and then in the process that India will become actually third largest economy by 2028 if the current progress goes, overtaking both Japan and Germany in that year. In that year, India GDP is estimated to be crossing $5 trillion and the gross value added by MSMEs in India's GDP was 30.5 in 1920. Despite unprecedented COVID conditions in the country, the sector contributed 27% in 2021 and then rebounded to 30%, almost 30% in 2023. These figures highlight the sector's potential and significance in the country's growth, economic growth, stability, and importance to the country. The development of MSME is not only crucial for fostering entrepreneurship, but also important for promoting regional development and reducing economic disparities all over the country. You know, recently, Honorable Finance Minister announced in the budget that the Pradhan Mantri Mudra Yojana scheme, which was limited, has been increased to 20 lakhs. Initially it was, currently it is 10 lakhs. That Honorable Finance Minister announced that it will be increased to 20 lakhs. And recently, last week only, the orders have been issued. And the first loans actually have started rolling out. Honorable Finance Minister today formally will hand over a couple of loans
to the beneficiaries of Tarun Plus. We are calling them as Pradhan Mantri Mudra Scheme under Tarun Plus. This new limit we expect that will ensure large number of MSME entrepreneurs will get benefited through the enhanced lending fund. And this is also guaranteed by the Credit Guarantee Fund for the MSME that is there with the Ministry of Finance. And apart from this, I think MSMEs also require support in terms of technology, in terms of marketing, in terms of skills required. And SIDBI is there, I think CMD SIDBI is there. We would like SIDBI to play much higher important role to promote, to handhold, and also to guide the SMEs, so that we have world-class SMEs in the country. In fact, world-class means world-class. You know, if you can look at the countries like Taiwan, Vietnam, South Korea, and Japan, they have very world-class SMEs. Even the small number, anywhere between 25 to 100 people working in the SMEs, but the products are sold all over the world. We should specialize in some products. I think we should be able to do that, provided we have credit support, technological support, and then marketing guidance. Now, with the strengthened digital infrastructure, that public infrastructure we are doing, I think we should be able to leverage SMEs. The government is committed. Honorable Finance Minister is committed. Honorable Prime Minister is committed. Madam in her budget speech mentioned several times the importance the country is laying for MSMEs. And we are committed to promote MSMEs in all round, whatever is possible. And any entrepreneurs you are going to interact with Madam now, if you have any innovative ideas, how to promote MSMEs, I think you should be very frank to share those ideas. We will be welcoming that, we will examine that, and would like to take forward. With these words, I would like again to thank Honorable Finance Minister, who has been taking a lot of time to go around the country to promote MSMEs. In fact, in the month of August, Madam was there in Udaipur, Rajasthan. After that, we went to Northeast, Itanagar, spent 3 days almost. Imagine a small place in Itanagar, which is located in between Myanmar, China, and this thing. Spent there. And then today we came here to Karnataka to promote MSMEs. So that actually shows her personal commitment to promote MSMEs. And with these words, I thank once again all of you who have joined us for this interaction session. Thank you so much. Thank you very much, sir, for your words in setting the tone of the program. Since more than 3 decades, SIDBI has been instrumental in providing financial assistance and promoting growth in the micro, small, and medium enterprises sector. To expand its outreach and facilitate easy access of credit to MSMEs, SIDBI is opening 6 new branches in Karnataka. May I request Honorable Finance Minister to virtually inaugurate the following branch locations in Karnataka. We have Tumkur, Shimoga, Mangalore, Raichur, Vijaypura, Kalaburgi, and also new office premise of SIDBI Peenya branch. Began its journey in 1990 and since has been playing a stellar role in promotion, financing and development of MSMEs. In its more than 34 years of existence, in addition to building a sizable direct finance portfolio, it has also launched pioneering initiatives in the areas of microfinance, green finance, digital platforms and startup finance. It works closely in the MSME clusters across the country to strengthen the MSME ecosystem. Pursuant to the budget announcement, SIDBI has embarked on a program to further increase its cluster outreach. SIDBI today is opening 6 branches in Karnataka in Tumkur, Shivamoga, Bengaluru, Kalaburgi, Vijaypura and Raichur and upgrading its Peenya branch. With this, SIDBI's reach will extend to 160 clusters all over India. It is a matter of great privilege for us that these branches are being inaugurated by Honorable Union Minister for Finance and Corporate Affairs, Srimati Nirmala Sitharaman. Thank you very much, Honorable Finance Minister, for doing the honors.
Nari Shakti Branch Office of Union Bank of India is a new concept which will go a long way towards women empowerment, enabling them to contribute further to the growth and development of our country. These branch offices of Union Bank of India are being opened at Bengaluru, Chennai, Jaipur and Vishakhapatnam. May I request Honorable Finance Minister to please do the honors and inaugurate these 5 branches. They are completely manned by women. That has to mention. India is proud to launch its Nari Shakti branches. In pursuit of the Government of India's initiative to empower women entrepreneurs and foster self-reliance, we are initiating Nari Shakti branches at Bengaluru, Chennai, Vishakhapatnam and Jaipur. These branches are dedicated to women entrepreneurs and will provide credit facilities along with comprehensive advisory services, workshop for startups, mentorship and networking, skill development programs and more. We are delighted to dedicate our Nari Shakti branches to the nation at the hands of Srimati Nirmala Sitharaman, Honorable Minister of Finance and Corporate Affairs. Thank you very much, Honorable Finance Minister. We are sure that with the inauguration of the new Learning Center of Canara Bank, skill sets of their officers as well as other PSBs will improve further, thereby making them more empowered. I request Madam Finance Minister to please inaugurate the state-of-the-art Canara Bank Learning Center at Bengaluru, Bengaluru. Center of Excellence. Inauguration by Srimati Nirmala Sitharaman, Honorable Union Minister for Finance and Corporate Affairs, Government of India. Vidya Vindate Amritam. Learning bestows the nectar of life. That's why at Canara Bank, learning is a continuous process. To facilitate the highest standards of in-house staff training, Canara Bank is proud to unveil Canara Center of Excellence. This new age training institution, spread across 6 acres, is strategically located in KIADB Financial City, just 10 kilometers from Bengaluru International Airport. Canara Center of Excellence is a green building with unique features. Basement plus ground plus 5 floors with a total built-up area of 1,35,000 square feet. Residential staff training facility with the state-of-the-art equipment. Canara Center of Excellence boasts of infrastructure that's beyond compare. To begin with, it has 3 smart classrooms with advanced audio-visual systems for executive training. To facilitate a comfortable stay, the center has well-planned accommodation. The front grass lawn offers a calming ambience and the center is equipped with a wide range of facilities. The modern kitchen caters to the dining requirements of guests. Other notable features: solar power generation. Conceived with world-class infrastructure and benchmarked to high standards of excellence, the Canara Center of Excellence is poised to play a pivotal role in Canara Bank's vision of becoming the best bank to bank with. Canara Bank. Together we can. Thank you very much, Honorable Finance Minister, for doing the honors. May I now request Madam Shobha Karandlaje to please address us. So would like to address first. So I'd like to request Honorable Shri Jitan Ram Majhi sir to please. Shri Pankaj Chaudhary to please address us. कार्यक्रम में उपस्थित वित्त एवं कारपोरेट मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, वर्चुअली कनेक्ट केंद्रीय मंत्री
श्री जीतन राम मांझी जी, माननीय उमेश सुश्री शोभा करंदाजे जी, सेक्रेटरी DFS श्री एम नागराजू जी, चेयरमैन सिडबी श्री मनोज मित्तल जी, सिडबी और बैंक के वरिष्ठ अधिकारीगण, मीडिया कर्मी, यहाँ पर उपस्थित हमारे तमाम बिजनेस घराने से लोग आए हुए मेरे साथियों, मुझे सिडबी आयोजित MSME की सभा में उपस्थित होकर इस अवसर पर आप सबसे मिल करके मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। और अभी जिस प्रकार से वित्त मंत्री जी ने देश के अन्य अन्य भागों में महिला सशक्तिकरण के लिए भी बैंक का उद्घाटन किया और ब्रांचों का उद्घाटन किया, उसके लिए भी उन सभी लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूँ। अभी सेक्रेटरी साहब ने बताया कि सूक्ष्म और लघु मध्य भारतीय उद्यम व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्तंभ है और जिसका देश में सकल घरेलू उत्पाद में 30% और विनिर्माण उत्पादन में 41% और निर्यात में 46% का योगदान है। MSME केवल व्यवसाय है बल्कि हमारे देश में नवाचार, रोजगार सृजन और आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण इंजन है और सीमित औपचारिक शिक्षा रखने वाले सहित विभिन्न प्रकार के श्रमिकों के लिए रोजगार का व्यापक अवसर का सृजन करता है। उद्यमशीलता को बढ़ावा देकर क्षेत्रीय विकास के लिए सहायता उपलब्ध कराकर आर्थिक असमानताओं को दूर करके सामाजिक विकास में MSME का योगदान अतुलनीय है और छोटे होने की वजह से MSME का महत्व और बढ़ जाता है। जब कभी कोई बड़ी इंडस्ट्री लगती है तो कहीं ना कहीं मटेरियल्स के दृष्टिकोण से, सप्लाई के दृष्टिकोण से जगह चेंज होता है और बड़ी इंडस्ट्री लगती है तो आज आधुनिक युग में कहीं ना कहीं ज़्यादा उसमें कर्मचारियों की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन MSME आज हम कहीं ना कहीं देश में विभिन्न भागों में छोटे से छोटे जगहों पे ज़रूरत के हिसाब से MSME के माध्यम से हम वहाँ पर कहीं ना कहीं विकास करते हैं। तो और MSME अगले 3 वर्षों में भारत को जो सबसे तीसरी स्थान पर अर्थव्यवस्था में लाना है उसमें MSME का बहुत बड़ा योगदान होगा और 2047 में जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हमें भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है उसमें भी MSME की बहुत बड़ा योगदान होगा। और अगर आप देखें तो 2014 के बाद से जब से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी की देख रेख में जब 2014 में प्रधानमंत्री जी आए थे तो देश की अर्थव्यवस्था हमारी 11वें स्थान पर थी और कोविड और दुनिया में वैश्विक तमाम युद्ध के बावजूद भी आज दुनिया में हम 5वें स्थान पर है और 2027 में निश्चित तौर से हम लोग तीसरे स्थान पर पहुंचेंगे। वर्तमान में MSME के सामने जो चुनौतियां हैं उनमें से एक है समय पर और सस्ते दरों पर लोन मिल पाना। सरकार MSME को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए CGTM, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और ऋण संबंध पूंजी सहायता योजना को सफलतापूर्वक लागू कर रही है। सरकार सिडबी और वाणिज्यिक बैंकों जैसी विकास संस्थाओं का मार्गदर्शन भी कर रही है ताकि वो भौतिक उपस्थिति और डिजिटल चैनलों के माध्यम से अधिक MSME तक पहुंच सके। पिछले बजट में ही माननीय वित्त मंत्री जी ने MSME को आसान ऋण उपलब्ध कराने की योजनाओं का घोषणा की थी जिन पर आज कहीं ना कहीं उस पर काम चल रहा है। NBFC MSME के लिए क्रेडिट विकल्पों को शीघ्रता से और अधिक सुलभ बनाने में भी बड़ी भूमिका निभाते हैं। MSME फंडिंग के लिए फिनटेक एक महत्वपूर्ण विकल्प बनता जा रहा है। इससे विशेष रूप से सूक्ष्म और लघु उद्यमों को कार्यशील पूंजी और अतिरिक्त सेवाएं जैसे इनवॉइस फाइनेंसिंग और टैक्स रिटर्न फाइल करने आदि में सहायता मिलती है। फिनटेक क्षेत्र में पिछले 10 वर्षों में भारत में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और इसका लाभ MSME को भी मिल रहा है। इन अनौपचारिक वित्त पोषण स्रोतों का अधिकतम लाभ उठाने के लिए MSME के उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत होकर औपचारिक अर्थव्यवस्था में शामिल होना और डिजिटलीकरण को भी अपनाना होगा। मैं वित्तीय संस्थाओं से आग्रह करूंगा कि MSME को औपचारिक रूप से देने में मदद करें और डिजिटल ट्रेल भी तैयार करें जिससे नियम आधारित
त्वरित ऋण मूल्यांकन की सुविधा उपलब्ध हो सके। ऑनलाइन भुगतान प्रणाली, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म और डिजिटल मार्केटिंग में एमएसएमई को अपने परिचालन में सुव्यवस्थित करने और घरेलू और वैश्विक स्तर पर व्यापक ग्राहक आधार तक पहुंचने में सहायता प्राप्त हो रही है। एमएसएमई को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। एमएसएमई के वैश्विक पहचान बनाने के लिए अपनी उत्पादकता के प्रतिस्पर्धात्मक भी बढ़ानी होगी। वर्तमान समय में उत्पादन आपूर्ति श्रृंखला कई देशों तक फैली हुई है। एमएसएमई को अपनी उत्पादन प्रक्रियाओं की कार्यक्षमता तथा गुणवत्ता को बेहतर करना होगा और इन वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के साथ एकीकरण करना होगा। मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रम में और विभिन्न निर्यात संवर्धन योजनाओं में एमएसएमई को उनकी वैश्विक उपस्थिति बढ़ाने में अपेक्षित सहायता प्रदान कर रही है। एमएसएमई के लिए ग्रीन प्रैक्टिस को अपनाना महत्वपूर्ण है। इसके लिए एमएसएमई द्वारा खुद में निवेश करने की जरूरत है। पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकियों और प्रक्रियाओं को अपनाने से छोटे और मध्य उद्यम न केवल पर्यावरण की रक्षा में मदद कर सकते हैं बल्कि बाजार में प्रतिस्पर्धा का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। ये पीनिया जैसे समूहों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। ऐसा करके एमएसएमई वैश्विक परिदृश्य में भारत के पर्यावरण रक्षा के कमिटमेंट में अपना अमूल्य सहयोग प्रदान कर सकता है। भारतीय एमएसएमई का परिदृश्य सकारात्मक दिखता है। इन पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करके आप अपने उद्यम को कौशल और प्रतिस्पर्धा में सुधार ला सकते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के 2047 के विकसित भारत के विज़न को साकार करने में एमएसएमई का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि एमएसएमई को और मजबूत करें ताकि इसके महत्वपूर्ण योगदान से 2047 के विकसित भारत में का सपना साकार हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, sir, for that very inspiring address. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. May I now invite Sushri Shobha Karandlaje to please address us. माननीय निर्मला सीताराम जी, वर्चुअली जुड़े हैं हमारे कैबिनेट मिनिस्टर जीतन राम मांझी जी, माननीय पंकज जी, मित्तल जी, नागराज जी, all the officials from Government of India, officials from CDB, Union Bank, Canara Bank and all the bank officers, सभी एंटरप्रेनर्स, भाइयों बहनों, अलग अलग देश का अलग अलग कोने में बैठे हुए सब मेरे बंधुओं, मीडिया फ्रेंड्स, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि निर्मला जी मेरे क्षेत्र में 2 कॉन्स्टिट्यूंस में का प्रवास किया है, एक दासरहल्ली का, एक मल्लेश्वरम का, इसलिए उसको मैंने बहुत बधाई देती हूँ। केवल प्रवास नहीं किया है, बहुत सारे योजना लेके आई है। आज 6 सिडबी का सेंटर कर्नाटक में खोल रहे हैं, इसके लिए भी बधाई देती हूँ। यूनियन बैंक का अलग अलग जगह में ब्रांचेस खोल रहे हैं एंड मेरा क्षेत्र में तीसरा बागलुरु बैटरायनपुरा में आता है। बैटरायनपुरा में अभी केनरा बैंक का ट्रेनिंग सेंटर भी हो रहा है, लर्निंग सेंटर भी हो रही है, वो भी मेरा क्षेत्र है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಮ ಸಲುವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಪೀಣ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ಗೆ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. MSME एक ऐसा क्षेत्र है एग्रीकल्चर के बाद
दूसरा बड़ा ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने का एक क्षेत्र है। 21 करोड़ एम्प्लॉयमेंट आप दिया है, एंटरप्रेन्योर्स दिया है, इसलिए एंटरप्रेन्योर्स को मैं बधाई देती हूँ। इतना ज़्यादा नौजवानों को, महिला को आप एम्प्लॉयमेंट दी है। इसका विस्तार करने का बहुत स्कोप है, क्योंकि मैडम जी ने पिछले बजट में एमएसएम का पारा पढ़ रही थी, हमारे लिए बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पहली बार एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे योजना को घोषणा भी मैडम जी ने किया। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक लक्ष्य है, देश का नौजवानों को एम्प्लॉयमेंट देना। एम्प्लॉयमेंट केवल सरकार नहीं दे सकते हैं। सरकार में कितना है एम्प्लॉयमेंट, केंद्र सरकार में कितना है, राज्य सरकार में पूरा मिला जुला के कितना है, बहुत कम है। इसके कारण एम्प्लॉयमेंट देने वाले एमएसएमई है। हमारे ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है, क्योंकि एग्रीकल्चर से बहुत सारे नौजवानों बाहर आ रहे हैं, गांव छोड़ रहे हैं। इसके कारण वो किधर जाएंगे? आजादी के बाद ऐसा एक सोच था, महात्मा गांधी जी बोल रहे थे, छोटे इंडस्ट्री को बढ़ावा देना, छोटे को मदद देना, छोटे ही हमारे देश का निर्माण कर सकते हैं। ग्रामीण इंडस्ट्रीज, एमएसएमईज हमारा देश को बढ़ावा दे सकते हैं, ऐसे बोल रहे थे। मगर सत्ता के आने के बाद बड़ा बड़ा इंडस्ट्री को हम मदद किया। ये बड़ा इंडस्ट्री में कितना बचा है, इसको एक बार आंकड़ दिखाना, मैडम के पास आंकड़ है। हमारे राज्य में कौन कौन बड़ा इंडस्ट्री हम बनाए, एनजीएफओ, एचएमटीओ सब बंद पड़ा। क्यों? अलग अलग कारण है। पैसा तो दिया, एम्प्लॉयज काम में आया, बाद में अलग अलग कारण से वो बंद पड़ा। पूरे देश में ऐसे हुआ है। इसके कारण अभी ज्यादा लोगों को, ज्यादा नौजवानों को, युवतियों को काम देने वाले एक ही हमारा तो बचा है, वो हमारा एमएसएमई है। एमएसएमई में अलग अलग जगह में जाती हूँ, सब जगह में एक ही बात बोलते हैं, एमएसएमई को हमारे टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन करना, फाइनेंस का मदद मिलना, तीसरा हमारा एम्प्लॉयज का स्किलिंग एंड अपस्किलिंग करना। ये बहुत बड़ा इश्यू है पूरे देश में। लेबरर्स तो मिलता है, बट स्किल लेबरर्स कितना मिलते हैं, वो बहुत बड़ा इश्यू है। स्किल्ड लेबरर्स का ऊपर ही हमारा प्रोडक्शन का पूरा हिस्सा बनता है। एंड मैं कभी भी जाती हूँ, मैं पहले कृषि मंत्री थी, फूड प्रोसेस का मंत्री थी, तब भी मैं वही बोलती हूँ, हम कुछ भी प्रोडक्शन करें वो एक्सपोर्ट क्वालिटी करे, कुछ भी करे। तो कृषि में मैं बोलती थी, हमारे देश में हम खाने के लिए एक स्टैंडर्ड एंड बाहर बेचने के लिए दूसरा स्टैंडर्ड। ये कैसे होता है? हम क्या खाते हैं उसको हम पेस्टिसाइड रेसिड्यू का टेस्ट नहीं करते हैं, बट बाहर तो हम ऐसे नहीं बेच सकते। वो रेडी टू ईट हो, रेडी टू कुक हो, ताजा हो, पेस्टिसाइड का रेसिड्यू का आधार पर ही बाहर देश वाले लेते हैं। इधर भी बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हैं, फ्रूट प्रोसेसिंग करने वाले। इसीलिए हम कुछ भी बनाइए, अच्छा क्वालिटी बनाना चाहिए, एक्सपोर्ट क्वालिटी बनाना चाहिए, हम खाने के लिए भी, हम बाहर बेचने के लिए भी। उसके लिए स्किल लेबरर्स चाहिए, टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन करना चाहिए, मार्केटिंग के लिए सोचना चाहिए। मैं कृषि मंत्री थी, अब हम सब एम्बेसडर को एक बार बुलाया था, नाम था वो मिलेट का, पर हमारा लक्ष्य था
कौन सा देश को क्या चाहिए, उसका आधार पर हम प्रोडक्शन करना। कौन सा देश को क्या चाहिए, हम कुछ भी प्रोडक्शन करें वो उधर ही पड़ेगा, गोडाउन में रहेगा। इसीलिए कौन सा देश क्या चाहते हैं उसका आधार पर हम प्रोडक्शन बनाइए। ये केवल फूड प्रोसेसिंग के लिए नहीं है, ये हम सबको है। कौन कौन आज अलग अलग क्लस्टर में बैठे हैं, हम सबको है। डिमांड का आधार पर हम प्रोडक्शन बनाए। इसके कारण हम अलग अलग देश के साथ अभी जुड़े हैं। केवल फूड प्रोसेसिंग का नहीं, बाकी विषय में भी, बाकी टेक्नोलॉजी में भी, बाकी पार्ट्स में भी। अभी मैडम जी इंडस्ट्री में गई, बाहर देश में जाते हैं वो, बट ऐसा हम उसको एक्सपांड कर सकते हैं क्या, टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर सकते हैं सा, इसके बारे भी ऐसे हमारा भारत सरकार सोच रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना, एक्सपोर्ट बढ़ाना। अभी एमएसएमई का एक्सपोर्ट केवल 40% है, उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं उसका बारे में हम सोचना चाहिए। ऐसे बहुत सारे विषय में भारत सरकार सोच रही है। एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का बात पूरा देश में हो रही है। विपक्ष का लोग तो एम्प्लॉयमेंट कितना किया ऐसे ही बोलते हैं, बट मैं बहुत खुशी से बोलना चाहती हूँ, मैं लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का मंत्री भी हूँ। पिछले 6 साल में 6.5 करोड़ एम्प्लॉयज, नया एम्प्लॉयमेंट हम दिया है, वो ईपीएफओ में आए हैं। एम्प्लॉयमेंट दिया है ऐसे भाषण नहीं कर रहे हम, नया एम्प्लॉयज ईपीएफ से जुड़े हैं, प्रोविडेंट फंड से जुड़े हैं, ईएसआई से जुड़े हैं, उसका बात हम कर रहे हैं। कोई नहीं जुड़े हैं उसका बात नहीं। अभी भी हम 20 का ऊपर कौन इंडस्ट्री के साथ काम कर रहे हैं उसको हम काउंट कर रहे हैं, उसका नीचे कितना है। अभी फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन बहुत हम बनाए, उसमें जुड़े हैं, वो 20 का अंदर ही है, उसका काउंट हम नहीं कर रहे हैं। नया नया स्टार्टअप का काउंट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो 20 से अंदर ही आते हैं। उसके कारण पिछले 6 साल में लगभग हम 6.5 करोड़ लोगों को ईपीएफ से जुड़ने का काम हमारा सरकार किया है। आने वाले दिन में भी जरूर इसके साथ हम काम करेंगे। एंड मैंने बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मैडम को। बजट में भी एमएसएमई का लक्ष्य रखी है, एंड काम में भी हर बार हमारे से ज़्यादा, एमएसएमई से ज़्यादा मीटिंग मेरे मैडम कर रही है एमएसएमई का विषय में, एंटरप्रेन्योर्स को आगे बढ़ाने के लिए, उसको मदद करने के लिए। इसलिए आप सबको मैंने धन्यवाद देती हूँ, एंड मैडम के डिपार्टमेंट को मैं धन्यवाद देती हूँ। और एक बात है, अभी मैं एनएसआईसी गई थी दिल्ली में, वो तो एक ट्रेनिंग सेंटर है एनएसआईसी, नेशनल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन। मुझे लगा उधर जाने के बाद ये साउथ इंडिया में नहीं है, केवल उत्तर भारत का लोग ही उधर ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। मैंने सबको पूछा, अच्छा है, नॉर्थ इंडिया का बच्चे को ट्रेनिंग देने का बहुत अच्छा काम एनएसआईसी कर रहे हैं। मुझे लगा एक साउथ इंडिया में भी करना। इसका मैं ऑफिसर्स को इधर भेजा। अभी पीने में हम एनएसआईसी का दूसरा सेंटर खोल रही है। ऑफिसर्स आके इधर जगह ढूंढा, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका जगह भी दिया है, कैबिनेट में लास्ट वीक पास किया है। अभी तुरंत ही हम इधर शुरू करेंगे, बाद में बड़ा जगह मिलने के बाद हम बड़ा जगह में भी उसको लेके आगे जाएंगे, फिर हम शुरू करने वाले हैं। ऐसे इंडस्ट्री को मदद देने के लिए, स्पेशली एमएसएमई को मदद देने के लिए जरूर भारत सरकार, एमएसएमई डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं हमारे साथ। हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट स्किल ट्रेनिंग के लिए, स्किल ट्रेनिंग अलग से डिपार्टमेंट मोदी जी ने बनाया, एंड हर एक डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग हो रहे हैं। फूड प्रोसेसिंग में ट्रेनिंग मिल रहे हैं, कृषि में ट्रेनिंग मिल रहे हैं, नीति आयोग में ट्रेनिंग मिल रहे हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग मिल रहे हैं, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग मिल रहे हैं, आरडीपीआर में ट्रेनिंग मिल रहा है। और
हर एक डिपार्टमेंट में अभी स्किलिंग एंड अपस्किलिंग का वो ट्रेनिंग का काम हो रही है। आज बैंक भी ट्रेनिंग सेंटर खोलने का एक घोषण एंड इधर किया कैनरा बैंक। ऐसे तो बैंक वाले करते ही हैं, इधर फिर से एक सेंटर खोलने का घोषण किया। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद मेरा मैडम एंड पंकज चौधरी को। चौधरी जी हमारे क्षेत्र में आए, हमारे क्षेत्र में इतना काम आगे बढ़ाने के लिए सोचे। ये पूरा केवल बेंगलुरु के लिए नहीं है, पूरा देश का काम के लिए हम आगे बढ़ेंगे एंड जरूर आपके साथ जुड़ेंगे। आपका बिजनेस अच्छा हो, हमारा क्या मकसद है, हम एंटरप्रेन्योर्स के साथ बैठे तो केवल सरकार को कुछ मिलता है ऐसा नहीं है, तो डायरेक्ट टैक्स मिलता ही मिलता है। कर्नाटक बहुत बड़ा स्टेट है, डायरेक्ट टैक्स देने वाले जीएसटी मिलते हैं। हमारे साथ सरकार का ये टैक्स एंड जीएसटी के साथ साथ आप भी बढ़ना, आपका इनकम भी बढ़ना, आप ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना, ये मकसद लेके हम साथ में जाना। क्योंकि मोदी जी का लक्ष्य है 2047 में भारत को विकसित भारत बनाना। ये केवल सरकार का काम नहीं है, हम सब मिलके, हम सब जोड़ के 2047 में विकसित भारत बनाएंगे एंड देश को हर एक क्षेत्र में नंबर 1 बनाएंगे। इसके लिए आप सबका मदद चाहिए, आप सब मोदी जी के साथ चलना चाहिए एंड आपको मदद करने के लिए मैं सिडबी को कंग्रेचुलेशन देती हूँ। सिडबी ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत लोगों को, बहुत एंटरप्रेन्योर्स को मदद दे रहे हैं, बैंक्स मदद दे रहे हैं। एंड सिडबी का लक्ष्य, मैं तो मित्तल जी बता रहे थे, सिडबी का लक्ष्य है यही साल में हम 25 नया ब्रांचेस खोलेंगे, ऐसा लक्ष्य लेके सिडबी बैठे हैं। इसीलिए सिडबी का ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। जरूर आपका मदद चाहिए, अलग अलग विषय में मदद चाहिए, क्योंकि फाइनेंस मिले तो भी छोटा एक नया युवा सोच सकते हैं। कुछ फाइनेंशियल मदद मिलेगा तो वो सोच सकते हैं आगे बढ़ाने के लिए, नया स्टार्टअप करने के लिए, नया इंडस्ट्री बनाने के लिए सोचेगा। इसके कारण banks and SIDBI togetherly you are helping our young generation, new industrialists, new entrepreneurs. बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैडम, थैंक यू पंकज जी। Thank you so much, Madam जी, आपका बहुत शुक्रिया। That was a very enlightening address. Thank you. I'd now like to request Honorable Shri Jitan Ram Maji to please address the gathering virtually. बहुत बहुत धन्यवाद। खास करके जब हमारे केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री के स्तर पर वार्ता के लिए और बैंकों से सहायता के क्रम में जो आज बेंगलुरु में बैठक हो रही है, माननीय हमारे वित्त मंत्री वहां पहुंची हुई हैं। इसके लिए हम यही सोचते हैं कि हम बहुत भाग्यशाली हैं कि माननीय वित्त मंत्री आज हमारे यहाँ बीच उपस्थित हैं। माननीय वित्त मंत्री जी हाल में ही बजट में चालू MSME इको सिस्टम के लिए कुछ पहलों की भी घोषणा की है। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और आज यहाँ माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी उपस्थित हैं, माननीय वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी जी उपस्थित हैं, माननीय MSME राज्य मंत्री श्रीमती शोभा करंदलाजे जी हैं, केंद्र व राज्य सरकार के अधिकारीगण हैं, सिडबी के एवं बैंकिंग सेक्टर के अधिकारीगण हैं, उद्योग जगत के प्रतिनिधिगण हैं, मीडिया के मित्रों, आप सभी को इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, बहुत सारी बातें अभी सुन रहे थे, हम कुछ पुरानी बात याद दिलाते हैं। जब एक जुमला कही जाती थी, यहाँ उत्तम खेती मध्यम बान नीज चाकरी भीख निदान, और आज सबके मुखार बिंदु से ये सुन करके कि कृषि के बाद जो हमारा MSME विभाग है
उसका एम्प्लॉयमेंट में सबसे बड़ा योगदान है। तो हम समझते हैं कि ये पुरानी बातों का ही पुनरावृत्ति यहाँ पर हो रही है, लेकिन इसमें कहीं न कहीं कुछ ऐसी बातें हैं जिसके चलते अवरोध का भी सामना हमें करना पड़ता है। हम सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण योगदान करता है ऐसा बताता हूँ। विशेष रूप से विकासशील देशों में जहाँ रोजगार के अवसरों का सृजन और वैश्विक आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वहाँ सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग की विशेष महत्ता है। भारत में जैसा आप लोगों ने भी इस बात की चर्चा की कि MSME भारत के सकल घरेलू उत्पाद के 30% और निर्यात के 46% के हिस्सा है और सूक्ष्म व्यापार इकाइयों को लेकर मध्यम आकार के निर्माताओं एवं निर्यातान्मुख इकाइयों तक फैले हैं और ये MSME भारतीय अर्थव्यवस्था का मूल श्रृंखला के मूल में है। दूसरे शब्दों में ये विकास का इंजन है, मैं ऐसा मानता हूँ जैसा आप लोगों ने भी कहा। और हमारे MSME भी विकास को समावेशी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि समाज के कमजोर और हाशिए पर पड़े वर्ग के लोगों के साथ साथ बड़ी संख्याओं में महिलाओं को भी मालिक और श्रमिक दोनों रूप में इन उद्यमों में हिस्सा मिलता है। और खास करके युवाओं के संबंध में भी जो हमारे प्रधानमंत्री जी बार बार युवाओं के बारे में कहा करते हैं, वो आप लोग सब अवगत हैं कि हिंदुस्तान में युवाओं का प्रतिशत संसार में सबसे ज़्यादा है। वैसी परिस्थिति में जब 140 करोड़ हमारी आबादी है, वैसी परिस्थिति में अगर हम 58% युवाओं की संख्या को जोड़ते हैं तो हमारी संख्या बेरोजगारों की करोड़ों में हो जाती है। वैसी परिस्थिति में सरकारी तंत्र कोई ऐसा नहीं है कि जहां हम उनको नियोजन दे सकते हैं। वैसी परिस्थिति में लघु और सूक्ष्म और मध्यम उद्योग हमारी एक ऐसी विधा है कि जहां हम उनको इंगेज करते हैं। और इस माने में एक बात और जो हम बहुत पहले भी कहते हैं और यहाँ भी दोहराते हैं कि एक ऐसा समय था कि हिंदुस्तान जगत गुरु कहलाता था, और जगत गुरु कहलाता था वहाँ पर किसी प्रकार से कोई बेरोजगार नहीं हुआ करते थे, कोई गरीब नहीं हुआ करते थे, सब तरह से सक्षम थे। कब? उस समय ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ जो आज 24,000 हमारे बड़े उद्योग हैं लगे हुए हैं, ये नहीं थे। हमारे जो आज 6 करोड़ लघु मध्यम और सूक्ष्म उद्योग हैं, यही उस समय सर्वाइव करते थे और यही मिल करके आज भारत के इकोनॉमी को इस ढंग से बढ़ा दिया था कि संसार में सबसे आगे बढ़ गया था। आज आवश्यकता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि हमारे MSME को आगे बढ़ाने के लिए वो तत्पर हैं। बार बार उनके दिमाग में यही बात आती है कि हम MSME को कैसे बढ़ावें और यहाँ के बेरोजगारों को कैसे हम रोजगार दें। ऐसी दृष्टिकोण से हम कहना चाहते हैं कि हमारे जो MSME का जो पारिस्थितिक तंत्र है, इकोसिस्टम है, व्यक्तियों को अनेक रोजगार संभावनाएं प्रदान करके ग्रामीण क्षेत्रों का औद्योगिकरण करके आय वितरण में असमानता को कम करने में सहायता करता है। एक मूल मंत्र है जिसके चलते हम कर सकते हैं कि हमारा MSME है जो खास करके बेरोजगारों का बेरोजगार चाहे महिला हो या जेंट्स हो, उसको आगे बढ़ाने के लिए ये काम करता है। और दिनांक 1/7/2020 को उद्यम पंजीकरण पोर्टल के शुभारंभ से आज तक कुल 5.43 करोड़ MSME पंजीकरण हो चुके हैं, जिनमें से कर्नाटक में खास करके, क्योंकि कर्नाटक में ये कार्यक्रम चल रहा है इसलिए कर्नाटक का नाम लेना उचित है। कर्नाटक में खास करके 5.16 लाख MSME हैं और उद्यम में खास करके 17.44 लाख है। यूपी में, उत्तर प्रदेश में 17.72 लाख के साथ साथ 5वें स्थान पर कर्नाटक है। पंजीकरण MSME द्वारा दर्ज कुल रोजगार, जैसा कि सब लोग कहा, 22 करोड़ 88 लाख से अधिक है।
जो कृषि क्षेत्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदानदाता है, जिसकी चर्चा मैंने किया कि आज जो पुरानी बात हम लोग कहते थे, आज वही बात यहाँ पर अभी तक हुआ है। इसको और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और आप को मैं बताता हूँ कि रोजगार देने में भी अभी तक 35% हमारा ये जो MSME है ये प्रदान करता है, जो कोई ऐसा विभाग नहीं है जो इतना बड़ा रोजगार लोगों को देता है। हम प्रतिस्पर्धात्मक बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए व्यवसायों के लिए अपनी मूल गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करना और प्रतिक्रियाओं को औपचारिकताओं और कागजी कार्रवाई का बोझ कम करना महत्वपूर्ण है। इसी सोच के साथ MSME मंत्रालय द्वारा विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाने हेतु कई पहलें की हैं। हाल के वर्षों में शुरू की गई अधिकांश स्कीमों में पहले जैसे उद्यम पंजीकरण पोर्टल, उद्यम अशिष्ट पोर्टल, समाधान पोर्टल, चैंपियन पोर्टल, रैंप और PM विश्वकर्मा स्कीम के बोझिल प्रक्रियाओं को कई परतों पर समाप्त किया गया है और निर्बाध और लागत मुक्त तथा कागज रहित तरीकों से महत्वपूर्ण सेवाओं तक पहुंचाने की सुविधा किया है। कहने का मतलब कि MSME जो कैसे सरल हो और कैसे इसके तहत लोग पहुंचे, इसी के तहत ऐसा कार्यक्रम किया गया है। और इस माने में एक चीज, हमारे बैंक के सभी पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं और आप लोग जानते हैं कि हम निरा रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं और आज भी हम रूरल एरिया में रहते हैं। हम वहाँ देखते हैं कि बैंकों का जो सहयोग होना चाहिए छोटे छोटे इंटरप्रेन्योर्स को, वो सहयोग नहीं मिल पाता है, जिसके चलते बैंकों का चक्कर लगाना पड़ता है। इस माने में ऐसे तो अन्य विधाओं में हमारी सरकार या हमारा जो विभाग है 3% तक के उन्होंने गारंटी दी है और गारंटी देने के बाद उन लोगों को कहा है कि भाई आप बैंक लोन दीजिए। सबसे बड़ी बात सब्सिडी में बात आ जाती है। सब्सिडी नहीं मिलने के चलते हमारे जो बैंक के लोग जो हमारे उपभोक्ता हैं वो इधर उधर मारे फिरते हैं या कुछ रिलेक्टेंट होकर के कहते हैं कि साहब इससे कोई फायदा नहीं है। तो हमारा कहना है कि जब तक हमारे MSME से सब लोग नहीं जुटेंगे, छोटे छोटे लोग हैं जैसे उद्यम अशिष्ट है, उद्यम अशिष्ट में हमारे छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर होते हैं, मोची जूता बनाते रहते हैं सड़कों पर, दर्जी भाई वो कपड़ा सीते रहते हैं, वो कोई गिलास बनाते रहते हैं, कोई यूटेंसिल बनाते रहते हैं, कोई कपड़ा बनाते रहते हैं, कोई अगरबत्ती बनाते रहते हैं। ये सब लोग को अगर ठीक ढंग से हम लोग आगे बढ़ावेंगे तो निश्चित है कि नियोजन की जो पावर है और नियोजन जो हम लोग करना चाहते हैं और प्रधानमंत्री जी का ये जो विजन है कि हम सबको नियोजित कर सकें, ऐसा करना बड़ी जरूरी है। और ऐसा तब होगा जहां बैंकों का सक्रिय सहयोग होगा। और बैंक के बारे में मैं तो इतना कहना सिखा सकता हूं, हो सकता है कि हमारी बात थोड़ा सा ऐसा लगे कि मैं ये अवांछित बात कर रहे हैं कि जब भारत सरकार आपको गारंटी दे रही है कि आप लोन दीजिए गरीबों को, तो वहां पर आप क्यों मुट्ठी बांधते हैं, क्यों उसको आगे नहीं बढ़ने देते हैं? और उसमें फिर बीच में मिडिल मैन लोगों की भी कुछ बातें आ जाती है, भूमिका आ जाती है, जिसके चलते मिडिल मैन या उसके जानकार लोगों को ही फायदा होता है, बाकी लोग डिप्राइव्ड हो जाते हैं। इस चीज के लिए हम हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना चाहते हैं बैंकिंग सिडबी के लोग चाहे और लोगों को कि साहब ऐसा बात ना करके करीब उन लोगों को ऐसा कीजिए कि आपके पास अप्रोच करें और उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके, ये हम अनुरोध करना चाहते हैं। जैसे उपकरण है, ऊर्जा है और घटकों का विनिर्माण एवं अन्य क्षेत्रों के साथ साथ सेवाओं के लिए आपूर्ति का अपार संभावनाएं हैं इसमें, और MSME इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। बशर्ते प्रतिस्पर्धी मूल्य पर उत्पादन करके अनुकूलशीलता और क्षमता दिखलाते हैं। इस क्षेत्र अधिक रोजगार सृजन और सकल घरेलू उत्पाद और निर्यात से अधिक योग देने में सक्षम है। जैसा पहले भी कहा कि हर तरह से हम निर्यात भी दे सकते हैं, रोजगार भी दे सकते हैं, बशर्ते कि इसको आगे बढ़ावें। तो इसी तरह से खास करके जो कर्नाटक में बात आई है, तो हम कहना चाहते हैं कर्नाटक में उद्योगों का विस्तार हुआ है और पिछले 1.5 दशकों में कर्नाटक और विशेषकर इसकी राजधानी बेंगलुरु में वैश्विक स्तर पर IT उद्योग के साथ अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। वैसे हमारे राज्य मंत्री ने कर्नाटक के बारे में भी कुछ कहा कि वहाँ ज़रूरत है
और उत्तरी भारत और दक्षिण भारत की बात उन्होंने कह दी। खास करके हमारे NSIC के बारे में उन्होंने कहा कि दिल्ली में है, उत्तरी भारत में है, दक्षिण भारत में होना चाहिए, इसमें कोई बात नहीं। लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी है कि जैसे क्वायर बोर्ड है, क्वायर बोर्ड हमारे उत्तरी भारत में कहीं नहीं, कोई नाम नहीं जानता है, और क्वायर बोर्ड के माध्यम से हम बहुत लोगों को दे सकते हैं नियोजन, और हमारा एक्सपोर्ट भी आगे बढ़ सकता है। तो इसलिए बैंकिंग विभागों के लोगों से भी अनुरोध करना चाहते हैं कि क्वायर बोर्ड जो है वो इधर उत्तरी भारत में भी आवे, और उसके लिए जो भी करना पड़े करना चाहिए। हम समझ रहे हैं और इशारा को, और उसी तरह से MSME भारत में विकसित भारत का 2047 की यात्रा के प्रमुख स्तंभों में से एक है और बना रहेगा। हमारी सरकार रोजगार सृजन और इसके साथ साथ देश के विनिर्माणकारी उत्पादों और निर्यातों में MSME की महत्व भूमिका को देखते हुए इसके विकास के अधिक महत्व और प्राथमिकता देती है। भारतीय अर्थव्यवस्था का विस्तार और उसका समय विकास MSME के द्वारा ही सुनिश्चित किया जाता है। MSME को अपने व्यापार प्राप्तियों की नकदी में परिवर्तित करने के लिए अपनी कार्यशील पूंजी को अनलॉक करने की सुविधा देने के लिए बजट 2024 और 25 में ट्रेंड प्लेटफॉर्म पर अनिवार्य ऑन बोर्डिंग के लिए खरीदारों की टर्नओवर सीमा को 500 करोड़ रुपए से घटाकर 250 करोड़ रुपया करने की भी घोषणा की है। इसके लिए मैडम फाइनेंस मिनिस्टर को धन्यवाद देते हैं। और इस उपाय में ट्रेड प्लेटफॉर्म पर 22 अतिरिक्त सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्रेन्योर तथा 7,000 अतिरिक्त कंपनियों आ जाएगी, जिससे SME आपूर्तिकर्ताओं को काफ़ी मदद मिलेगी। मुझे यह सूचित करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि इससे संबंधित बजट के घोषणा के उपरांत MSME मंत्रालय द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है और इसको आगे बढ़ाने के लिए कटिबद्ध है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम उम्मीद करते हैं बैंकों का पर्याप्त सहयोग मिलेगा, और उत्तरी भारत में भी जो अभी हर तरह से MSME क्षेत्र का विकास न हो पाया है, इसमें बैंकों का सहयोग मिलेगा। ऐसे मंत्री होने के नाते हमारा फर्ज है, मैं करूँगा, लेकिन बैंक से भी मैं उसमें आशा का भी सहयोग का आशा करता हूँ। इसी चंद शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Honorable Minister. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. We'll now have the signing of the MOU. SIDBI and Pina Industries Association have been working together for quite a long time for the benefit of MSMEs. To formalize this association and to take it to newer heights, today SIDBI and Pina Industries Association are exchanging an MOU. Besides capacity building of the association by SIDBI, the association would refer its members to SIDBI for sanction of credit facilities, for which SIDBI has graciously agreed to share a portion of fee with the association. Thank you. Ladies and gentlemen, the Tarun Plus scheme was announced by our Honorable Finance Minister in her Union Budget for such Tarun beneficiaries who have successfully repaid their loans. May I now request Honorable Finance Minister to hand over sanction letters to 5 MSME customers of Canara Bank under the Tarun Plus Yojana of Mudra. May I also request Managing Director Canara Bank to please join us. Idagunji Enterprises has been sanctioned financial sanction of 15 lakhs. This is a first generation woman entrepreneur engaged in aluminium fabrication. Ms. Ruplata is here to collect the sanction letter.
First, ma'am, last week only approved this. First one. First one. First one. Shri Sai Krishna DXN Health Palace, they've been sanctioned 20 lakhs. The firm is engaged in sales of food supplements. From 10 years they've been in the business. Shri Krishnappa is here to collect the sanction letter. Manju Enterprises, engaged in manufacturing of machine tools, has been sanctioned 15 lakhs. We have Shri Bhaskar to collect the sanction letter. Shri Anand TG, engaged in operating tours and travels. They've been sanctioned 15 lakhs for purchasing vehicle for expanding operations. We have Shri Anand TG to collect the sanction letter. SMS Engineering has been sanctioned 20 lakhs. They are engaged in cutting machine tools. We have Shri Murthy to collect the sanction letter. Under this scheme, so far, they have 11 sanctions for a total of rupees 1.7 crores. Thank you, Honorable Finance Minister, for doing the honors. I now request Honorable Finance Minister to hand over sanction letters to MSME customers of SIDBI. We Aim Group has been sanctioned 140 lakhs. Under the newly launched scheme Cash Defense, the firm is engaged in manufacturing of precision sheet metal and machine components used in aerospace and defense industry. Mr. Girish is here to collect the letter. Inviting Ms. Sania Khanna from Bliss Aerospace Components Private Limited for being sanctioned 15 crores. 15 crores for the expansion project. They are engaged in manufacturing of precision components and fasteners for aerospace industry. I'm sure it's so heartening to see youngsters so involved in such high-tech businesses. Congratulations. Mr. T.N. Paramashekharappa and Mr. Kiran Kumar from Rajeshwari CNC Machining Technologies, engaged in manufacturing and designing of general engineering components. They are sanctioned 13.56 lakhs. Srimati Vinita from Sense Mill Aero Solutions, engaged in manufacturing of precision machine components for various sectors including aerospace. They've been sanctioned 66.44 lakhs. Sharda Roofing Industries, Shri Manish Patel, they've been sanctioned 100 lakhs, engaged in manufacturing of color-coated roofing sheets. Herms Laboratories Private Limited, we have Shri Surya Kant. They are engaged in developing, manufacturing and marketing of quality basic drug and specialty chemicals. They've been sanctioned 14.86 lakhs. Shri Prakash Ayyappa from Shri Sainath Dal Industries, engaged in manufacturing of grain mill products. They've been sanctioned 97.5 lakhs. Srimati Anu Gupta from Kavya Engineering Private Limited, engaged in manufacturing of precision components, and they've been sanctioned 44 lakhs. Aditya Exports,
engaged in processing of cashew nuts and exporting to Kuwait and UAE. They've been sanctioned 74.47 lakhs. Shri Aditya Arpai is here in Bangalore, but he couldn't make it because he's not well. So I'd like to request Mr. Ravindran from SIDBI to please accept the letter on his behalf. QNU Labs Private Limited, Shri Mark Matthias, a pioneer of quantum technology in India catering to defense and government organizations. They've been sanctioned 500 lakhs. Shri Vijay Kumar from Vermax Technologies engaged in manufacturing of precision machine components used in automobile, aerospace and general engineering. They've been sanctioned 24.5 lakhs. Madam, as you see today, SIDBI has distributed 11 sanction letters aggregating to rupees 25.75 crores to different enterprises ranging from production of grain mill products to manufacturing of high-end machine components used in defense, is also to enterprise engaged in quantum technologies. This shows our commitment in supporting traditional as well as high-tech enterprises with same spirit and enthusiasm. Honorable Finance Minister, thank you very much for doing the honors, ma'am. I now invite two MSME Nari Shakti beneficiaries of Union Bank of India to receive sanction letters from the hands of Honorable Finance Minister. May I also invite Managing Director of Union Bank of India to please join us on the dais. Bhavatewala and Company, engaged in manufacturing and trading of pure Mysore silk and twisted silk yarn. They have been sanctioned 650 lakhs. We have DN Mirabai to collect the sanction letter. Ms. Sarojamma from Elsa Consultancy, engaged in trading of electricity, power and consultancy services. They've been sanctioned 450 lakhs. Once again, thanking Honorable Finance Minister for doing the honors. Thank you, ma'am. She learned and then now she's not even able to understand our ministry. I told her, I told her you speak in Kannada only. Maybe after seeing minister, she can stop. Ladies and gentlemen, now the moment has come for which we've all been waiting for. May I now have the privilege and honor in inviting Honorable Finance Minister Madam to kindly address the gathering. Namaskar, Honorable Minister, Senior Minister Shri Jitendra Manji ji, who's joining us virtually, my colleague in the Cabinet and the Council of Ministers, Pankaj Chaudhary ji, my colleague again in the Council of Ministers, but my senior in Karnataka, Nari Shakti, and also the MP from this area, Minister of State in the Union Council of Ministers, Shobha Karandlaje ji, Secretary DFS, Nagaraju ji, SIDBI's Chairman, MD, Mittal ji, and all the CMDs of public sector banks who have joined us today, the entire Peenya community of small and medium industries, and for the various MSME clusters who have joined us from different parts of the country.
and I understand Senior Minister Jiten Ram Manji ji is in Gaya. Even there is a very big cluster. And I'll start with an assurance to Senior Minister Jiten Ram Manji ji that I'm visiting Gaya also. And I'm sure all the bank managers and CMDs will visit Gaya. And that much attention we gave for Peenya and entire Karnataka, we'll give for Gaya and entire Bihar also. Under Prime Minister Modi, no state will be left behind. We'll attend to every state. And no MSME will be left behind. We'll attend to every MSME. And this is not something by word of mouth that I'm saying. I'm sure any MSME in any part of this country will say, and I don't want to start with a challenge, but I certainly will ask if there is even one MSME in this country which was untouched by our banks during the COVID pandemic. पैंडेमिक के समय देश में ऐसे एक भी एमएसएमई नहीं होगा। मैं सीनियर मिनिस्टर मांझी जी के लिए मेरा टूटा फूटा हिंदी में ये कहना चाहती हूँ, इस देश में ऐसे एक भी एमएसएमई नहीं होगा जिनको हमारे बैंकों ने कोविड के समय ना टच किए होंगे। सबके पास मैसेज पहुंचा, सबके पास फोन कॉल पहुंचा, सबको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आदेश के अनुसार हमारे बैंकों ने उस समय हर गरीब को जैसे अन्न मिला उस समय और आज तक मिल रही है, मुफ्त में अनाज मिल रही है, उस मॉरेटोरियम के समय, कोविड के समय हर एमएसएमई के पास मैसेज गया, फोन कॉल गया, बैंकों के द्वारा बैंक मित्र जाकर उनसे बात किया कि आपको इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी लिक्विडिटी स्कीम में कुछ करना है क्या। और बैंक को यह अधिकार नहीं था कि आप किसी को मना कर सकते हो, किसी को मना नहीं किया। हर एमएसएमई को ECGLS के द्वारा उनका अगर जरूरत पड़े तो मदद मिला ही मिला। ऐसे ही मैं आश्वासन दिलाना चाहती हूं एमएसएमई मिनिस्टर को, और उनके विभाग है इसीलिए उनके साथ भी लूंगी कि एमएसएमई को इस बार बजट में जो 5 अनाउंसमेंट्स हुआ है उसमें से 4 आज से जरूर लागू होगा। सिर्फ एक जो गारंटी का 100 करोड़ का गारंटी का अनाउंसमेंट हुआ है उसका कागज कैबिनेट में पहुंचने वाले हैं जल्द से जल्द। सेक्रेटरी डीएफएस हैं इधर। कैबिनेट के अप्रूवल मिलने के तुरंत बाद वो 100 करोड़ का गारंटी जो हम दे रहे हैं एमएसएमई मिनिस्ट्री के द्वारा और बैंकों के द्वारा, वो जो गारंटी मिलेगा वो भी लागू हो ही जाएगा। मैं हर क्लस्टर एमएसएमई क्लस्टर को जाकर मैं खुद मीटिंग ले रही हूं। जैसे सेक्रेटरी बैंकिंग ने बताया, उदयपुर में गई थी, आज पीनिया में हूं। हर एमएसएमई के पास, क्लस्टर के पास, और मैं एमएसएमई क्लस्टर का सूची मेरे पास नहीं है, एमएसएमई मिनिस्ट्री में है। उनके लिस्ट अगर मेरे पास नहीं आता मैं उधर तक पहुंचना भी मुश्किल समझती। इसीलिए हर बार मंत्री जी को, मांझी जी को फोन करके हम उनके आशीर्वाद और उनके प्रेजेंस के लिए भी बात करते हैं कि आप भी शामिल हो जाइए, क्योंकि एमएसएमई को आपके द्वारा ही विश्वास पैदा करना है। मंत्रालय उनका, बजट में घोषणा हुआ ठीक है,
मगर ये पांचों ऐसे कार्यक्रम जिसका आप एक आज देखा भी है, मुद्रा में तरुण में जहां 10 लाख तक सीमित था लोन, आज 20 लाख तक बढ़ाया गया है। कल परसों ही उनके मंत्रालय के द्वारा और डीएफएस के द्वारा ऑर्डर भी निकला। ऑर्डर कल निकला, आज 11 लोगों को कैनरा बैंक से तरुण कैटेगरी में तरुण प्लस का बेनिफिट मिल रही है। ये पांचों लोग जो मेरे सामने आए और बाकी लोगों को भी मैं बधाई देना चाहती हूं, क्योंकि वो तरुण पहले में भाग लिए, अच्छा सा उसका फायदा उठाए और सही समय पर वापस भी दिया पैसा। आज इसीलिए उनको वो एनहांस्ड लिमिट में दोबारा तरुण प्लस में भी मिल रहा है। एमएसएमई का क्रेडिबिलिटी यही, वो कभी भी जो बैंकों से ऋण लेते हैं उसको अच्छा सर्विस भी करते हैं, उनका बिजनेस भी बढ़ाते हैं। So I just want to, because I'm in Bangalore, I want to highlight the fact which has been said by many of them already. Karnataka has a very big share in MSME. You may rank 5th, but you are doing some of the very unique things. Like we saw about how an aerospace component manufacturer came to take the loan from SIDBI. There is one little element which I want to highlight here in favor of SIDBI. SIDBI has understood how business requirements for small industries vary from company to company. Unlike the way the large companies have a very standardized process of operation, their business cycle is very well understood. So when you provide loan to them, the template before the banks are already there. But when it comes to SIDBI, when it comes to small businesses, to understand their cycle, business cycle and their requirements, and then to tailor make the product which the bank can extend to the MSME is a skill in itself. Many public sector banks are only now sitting up to that challenge. I don't think it is a shortfall from the public sector banks, particularly the large banks, but it is more like because they are doing many other things, this becomes one of the several things they do. And now they are able to understand the requirement is to be tailor-made, and therefore they have a set of specialized people who are dealing with it. That's why today you saw one bank, Canara Bank, doing it. You saw another Union Bank doing it. I'm sure many others will soon follow. But what SIDBI has done is something which I would like to highlight. I'm sure I'm not going to define it all, describe it all, but I just heard the CMD tell me that for a company which is doing very well, an MSME, which is doing very well and which is in defense production, they did not want to dilute their shares by offering equity to somebody else, even if it is SIDBI. At the same time, they were in need of more money for expanding the business, probably even to export. SIDBI has come up with a very tailor-made, unique portfolio, which is not giving him an equity, but is giving a debt, but yet recognizes the possibility of that business widening without diluting the promoter's share. The details I'm sure the CMD will do some time, but I've instantly taken that as an example to say SIDBI understands small businesses. SIDBI can deal with MSME's credit requirements and tailor-make products for the credit requirement of MSMEs. And that is why SIDBI's presence in MSME clusters will do immense benefit for the MSMEs. And that is one of the reasons why we have come up with this point of eventually, within a matter of 2 to 3 years,
SIDBI will be present physically in every MSME cluster. Now, they are expanding little by little. This year, like Minister said, SIDBI will open 25 branches in clusters this year. But gradually they will be moving towards every cluster a SIDBI. And because of that, I think the cost of loans that small businesses will take from them directly will be far lesser than when that money is given to the public sector bank or banks and then forward lending. So there can be that advantage which SIDBI can give directly. That doesn't stop you from going to the PSPs, because they also understand the importance of MSMEs and their business requirements. The share of MSMEs, the contribution that MSME is making to India's gross value addition to export, I'm not going to elaborate on that, that's already been said. Honorable Minister Maji has also explained how the Udyam portal has 5 crore registrations, MSME registrations. And together the MSMEs are providing 21 crore jobs. Only Karnataka has 35 lakh MSMEs and they provide 1.65 crore employments. So all that is there, and the role of MSME, therefore, there's no exaggeration and there is no gainsaying that you contribute majorly to India's economy. But what I want to highlight here, even at the cost of repetition, is the 5 main things that we've done in this budget. For MSME in specific, introduction of a special credit guarantee corpus to help MSMEs, and that will be very helpful during the time of distress. Introduction of a new credit guarantee scheme, which I told you will have to go to the cabinet. Sooner it will go and you will get the benefit of it in the manufacturing sector to facilitate term loans for MSME. The grievance which has been for a very long time is that MSMEs get working capital from banks, they don't get term loans, loans for plant and machinery. Now, with this guarantee, which was announced in the budget, for up to 100 crores, the guarantee will be provided even if you are going to borrow more from the banks. For the first 100 crores, the guarantee will be given. And therefore, you are going there collateral free to that extent. You don't even need a third party guarantee. No collateral, no third party guarantee. Government gives you the guarantee for up to 100 crores. Then public sector banks will develop a new credit assessment model. Most often the grievance has been, banks give us the loan, but about us they have no idea. In old-fashioned banking, local people were appointed in some branches. Local people used to be manning local area branches, and therefore they knew which business is what is their potential, what is their credit worthiness, and based on that, they will be talking to the client and determining their credit worthiness. Now, because it's outsourced, people who don't know you, your credibility, your potential, are assessing you. And the grievance has been, no, they don't understand us. And therefore, the credit assessment made about us is always underplayed. We don't get justice. But now we have announced in this budget that banks will do the credit assessment within themselves. Each bank will have their own credit assessment model. Eventually, these models will talk to each other, and therefore, there cannot be wide discrepancy between one bank's credit assessment towards and in comparison to the other banks. But banks will do it on their own now. Mudra loan limit was already mentioned, 10 to 20 lakhs, and that's already given effect, and you saw beneficiaries already. SIDBI branch, over the next 3 years, like I said a minute ago, this year will open 24 branches, and then it will reach its all of the cluster 168 major MSME clusters as well. So this will improve the credit access to MSMEs.
There are few other things which the minister himself said. The turnover threshold for TRED's participation has been brought down from 500 crores to 250 crores. So the trade receivable discounting system will benefit smaller units further. Cumulatively, 98.9 lakh invoices amounting to 2.9 lakh crores have been discounted on the TREDS platform as of March 31st, 2024. That's not a small sum. So, supporting MSMEs for better liquidity and working capital management. Then, investment ready, another announcement in the budget. Investment ready plug and play industrial parks will be set up with complete infrastructure, and they are not going to be set up too far away. They will be near 100 cities in partnership with the states and with the private sector. So you are in Peenya today, hopefully with the cooperation of the state government here, sooner we'll be able to have an industrial park not far away from here, and that will benefit you because Peenya is already fully saturated. I'm sure we are doing this with other states, about 100 of them will be set up. E-commerce export hubs are also being set up. Today, standing in Bengaluru, can I speak of e-commerce? Yes, this is the place which really is churning out numbers for e-commerce. So e-commerce export hubs will be set up with private partnership, and it will facilitate international trade and export related services as well. Now there are so many other steps which have been taken, continuously after Atmanirbhar Bharat announcement in 2020. But here I want to draw the attention of all those who are present here that SIDBI has regional office in Bengaluru and 5 branches in the state with an outstanding portfolio of 1,169 crores with virtually nil NPAs. That's a very big point in favor of the MSMEs. SIDBI alone, 1,169 crores exposure, but no NPA. This is a big story to the advantage of MSMEs, and that should be spoken about. Now, 20 industrial clusters get covered because of the opening of these 5 new branches of SIDBI, and 5 or 6 branches of SIDBI, and this will help in spreading and strengthening MSMEs in Karnataka. Minister Shobha spoke about it. I want to expand on this. The strength of Karnataka's industry, and therefore the strength of India's industry, is actually being strengthened because of the direct finance facility which SIDBI will provide. Now, lending targets are a very big issue. I just want your attention for a minute. Outstanding loans for public sector banks towards MSMEs has shown a growth of 9.2% over the last financial years. Public sector banks, 9.2% over the last 2 financial years. But private banks have grown 25%. And NBFCs have grown 39% during the same period. All right, I will grant it that the NBFCs probably start from a very low base, and therefore their performance may be higher, far higher than the PSBs and the private banks. The base effect is something which we'll keep in mind. But today, I fully support the voice which Senior Minister Jitan Manjhi has spoken about. Public sector banks, given their dominant presence in banking ecosystem and their healthy and resilient performance as of today, unlike what it was in 2013-14, public sector banks in particular
should take the lead in this initiative to increase lending to MSMEs and target greater growth in MSME lending. And I say this with Senior Minister MSME, MSME being here, and with all the senior management of India's public sector banks being here, that they should take higher initiative, far more initiative, and increase lending to MSMEs and target greater growth. Considering the growth rates of last 2 years, it is estimated, and I have been briefed adequately by the Secretary, Department of Finance, Financial Services in this matter, it is estimated that 4.21 lakh crores will be lent to MSMEs if everything was business as usual. In the normal course, public sector banks would have lent this year based on their performance in the last 2 years. 9.2% I said. Based on that, 4.21 lakh crores would have been lent this year, and this is an estimate. मैं एक बार हिंदी में भी बोलना चाह रही हूँ इसी विषय को. पब्लिक सेक्टर बैंक पिछले 2 साल में 9.2% के रेट पर MSME को लोन देने का कार्यक्रम बढ़ाया. जितना 2 साल पहले था उससे 9.2% बढ़ा करके MSME को लोन देकर आ रहे हैं पिछले 2 साल में. अगर उसी हिसाब किताब को सामने रखते हुए हम बात करेंगे तो MSME को इस साल मतलब जो जारी है मार्च 31, 2025 तक का साल में पब्लिक सेक्टर बैंक 4.21 लाख करोड़ तक MSME को लोन देने का क्षमता रखते हैं. वो कार्यक्रम भी जरूर बनाएंगे. मगर इस कार्यक्रम के दौरान मैं पब्लिक सेक्टर बैंक को एक टारगेट देना चाहती हूं इस साल के लिए. MSME लेंडिंग को 9.2% के रेट पर बढ़ाना ठीक है, मगर वो काफी नहीं है. इसीलिए ये 4.21 लाख जो आप करेंगे ही बिजनेस एज यूजुअल के मोड पे, उसके साथ 1.54 लाख करोड़ को मैं ऐड करके 5.75 करोड़ का टारगेट देना चाहती हूं पब्लिक सेक्टर बैंक्स को, so that credit reaches MSME this year itself. So I don't need to say it in English. If business as usual happens, public sector banks would have given in this year 4.21 lakh crores of credit to MSMEs. I wish to give a higher target to them, that they will not just satisfy themselves with 4.21 lakh crores. I set a target which is 1.54 lakh crore more. Therefore, 5.75 lakh crores is the amount which public sector banks will have to give as credit to MSMEs this year itself. So, for the next year, based on that performance, even now I would say 25-26 public sector banks should aim at touching 6.12 lakh crores, and by the year 26-27 7 lakh crores should be lent to MSME through the public sector banks. This is the target I would like to announce through this particular program. I shall be visiting MSME clusters, and each time I visit the MSME clusters, I would like a report from the banks as to how much they have progressed. So I want to highlight the fact that in terms of supporting MSMEs, there is not one measure which shall be less, and whether it is policy of financial assistance, I want the MSMEs to keep the interaction with MSME ministry and also with
the finance ministry, so that nothing shall be less in terms of the expectation which have to be met for the MSME's growth in this country. So that's a commitment I like to make, and I also would therefore highlight the fact from today there shall be credit outreach. The credit outreach shall happen in clusters, MSME clusters. It shall also happen in every branch of the public sector bank. MSME shall not feel any shortage of resources. Banks are there, they shall extend it for you. I do not want to go back to talking about what were the major steps taken since after Prime Minister Modi came in, particularly after COVID, where we had a lot of steps announced during the Atmanirbhar Bharat announcements, 5 budgets which were announced between 2 major budgets. I'm sure all of you are aware. One district, one product is also one of the things which every state has taken up. I'm sure you will benefit from it. And also the ONDC, the Open Network of Digital Commerce, which has been constructed or put through, or the platform created, digital infrastructure created because of government's funding, is a platform available for all of you all to seek the global market. I'm sure the MSMEs will use all this, and we will soon see that because of the strength with which MSMEs are progressing, this country's economy will get strengthened. There's one direct impact of government's public procurement policy, which I would like to highlight, which is very important. The public procurement policy announced earlier, long time back, said 25% of procurement of the government, central government's ministries, departments and central public sector enterprises, 25% will be procured from MSMEs. That's being fully followed through the GEM portal. All India in 23-24, central ministries, departments and public sector undertakings under the central government procured a total of 82,400 crore worth of goods from MSMEs, which constituted 33.30% of their total procurement. So we said 25%, we actually have achieved 33.3% of procurement from MSMEs. So the word given has been completely fulfilled. So government procurement for its requirements is now 33% coming from MSMEs. The policy benefited 2.36 lakh MSME units all over the country. So actually MSC units, medium and small units only, have benefited largely. I wouldn't take more of your time, but the numbers have been laid before you. The public sector banks, CMDs are here. SIDBI is coming to you. It is now the MSMEs who have to ensure that what the government intends is actually those which you benefit from. Every announcement, I would like you to make the maximum out of it. And if there are anything more, you'll keep the information flow alive. So thank you very much for being here today. Thank you very much, Honorable Finance Minister, Madam. Your presence and address today has motivated all of us, especially MSME entrepreneurs, in rededicating themselves to the economic development and prosperity of our great country. I'm sure that your thoughtful and encouraging words have sparked a new wave of energy, resilience, and determination among the audience in giving their best in their respective professional journey. Once again, many thanks, respected Honorable Finance Minister, Madam. Honorable Finance Minister, Madam, some entrepreneurs of Pina Industrial Cluster present here have been eagerly waiting to interact with you. May I have your kind permission to start the interactive session? Can we, ma'am? Can we have a mic here, please?
Happy evening, madam. Related to the budget announcement, whatever the women empowerment which you have made, we have taken an initiative from the Pinya Industry Association in the high school level. What is the Pinya industry contribution to the nation economy building? We have conducted the essay competition today, and total Pinya industry surrounding area, 35 schools have participated, 100 students have came out from that, and we have conducted. Secondly, the International Women Empowerment, International Women Entrepreneurs Day. This month, 23rd, we are organizing in and around of the Pinya. 600 women entrepreneurs we have shortlisted, and in that, 60 entrepreneurs we have conducted interviews and biography. We are going to release what their product making and video uploading in the YouTube channel. And industry park, whatever the plug and play you have made, in Daospete, whatever the KDB industrial area, they are announcing or allotment, they are giving for the larger segment. Small players they have not made. For that we request Shobhaji madam also for to bring it up industry park plug and play, 2 industrial park, 1 for especially women entrepreneurs. Thank you, madam. Good evening, Minister, Honorable Minister, Madam. Thank you for inviting us here. I'm a women entrepreneur, and I think schemes which are helping women entrepreneurs are really good. And many schemes need to be rolled out so that more and more women are involved in this process of getting into manufacturing sector. Usually, in most of the meetings in manufacturing sector, you don't see women; it's only men. And today, a lot of engineers are there, a lot of women are there in the field who can become entrepreneurs. So please do roll out some women-friendly more schemes for them. And second is we have this we have a huge population in the country. I mean, almost the highest in the world. So also medical equipment. SIDBI was very good during COVID time when we make oxygen generators. And during COVID time, we got funds very easily, and we were able to service a whole lot of more than 100 hospitals all over India. So it was only thanks to SIDBI we were able to do that. So I request you to have some schemes focusing on medical equipment market, because we are the highest population in the country, and also most of our medical products are imported. So very few are made in India. So that would be our request. Thank you, madam. 1 minute. I'm not sure if this lady is informed. There is a PLI scheme which includes medical equipment. So it's not as if that we have ignored medical devices. The medical devices park came first in Bangalore. So Can we have Bhopal connected, please? Bhopal on screen, please. Can we have them? मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने इतनी अच्छी अनाउंसमेंट आज MSME के लिए की। कोविड में MSME को आपने बहुत सहारा दिया, और मैं भोपाल से बोल रहा हूं, और मेरा एक तो और निवेदन है। एक तो आपने जो हमारे ग्रीवियंस थे कि बाहर की एजेंसीज हमारी रेटिंग करती थी, आप बैंक रेटिंग करेंगे, इसलिए हम आपके बहुत आभारी हैं। और एक मेरा और निवेदन है मैडम कि वुमेन एम्पावरमेंट करने के लिए जो कंपनियां अपनी कंपनी में वुमेन को ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देगी, उसके लिए कुछ इंटरेस्ट रेट में आप राहत देने की अनाउंसमेंट का मेरा अनुरोध है। एक अनुरोध ये भी है कि जो MSME अपने आप को बड़ा करके लार्ज सेक्टर में जाते हैं, उनके लिए भी थोड़ा आपके हृदय में
जो है वो सिंपैथी होनी चाहिए और उनसे सारी जो सुविधाएं हैं वो आप छीन लेते हैं। ये क्योंकि वहाँ पे एक उसी ब्रैकेट में रहने के लिए ये एक एनकरेजमेंट होता है, लेकिन बहुत सारी लोग पढ़ना चाहते हैं, उसमें आपसे हमारा अनुरोध है कि उसमें आप हमारी मदद करें जो अपने आप को बढ़ाना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। हम भोपाल एक इंजीनियरिंग क्लस्टर के रूप में आज अनाउंसमेंट जो हुआ है, हम भोपाल एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है रेलवे इंडस्ट्री के लिए। भोपाल में सबसे ज़्यादा रेलवे के जो प्रोडक्ट हैं वो बनते हैं। मेरा एक अनुरोध है कि एक सेपरेट, क्योंकि रेलवे एक बहुत बड़ा माध्यम है देश को जोड़ने के लिए, एक रेलवे के लिए स्पेशल क्लस्टर का अनाउंसमेंट होना चाहिए। धन्यवाद। Thank you, everyone, and I'd like to thank Honorable Finance Minister Madam for giving us this opportunity to entrepreneurs and representatives of clusters to have a meaningful and lively interaction with you. Thank you so much, ma'am. May I now request Shri Manoj Mittal, Chairman and Managing Director, SIDBI, to please propose a vote of thanks. It's my proud privilege to pay my gratitude to Honorable FM for her, not only her presence and not only for inaugurating branches of SIDBI, Union Bank, Training Sector of Canara Bank, but actually bringing MSME clusters to the fore. Most of the MSMEs reside in clusters, and by nature they need to collaborate, aggregate while they compete. And this happens only in clusters. So the clusters now being recognized as a financing tool, that's something which is very, very significant, and I'm very sure this is going to accelerate the flow of credit to MSMEs. And ma'am, thank you. I'm seeing for the first time 150 clusters, 150 locations, MSME location, on a single platform. Ma'am, you also made certain significant announcements. You have increased the target, and I'm very sure all we bankers, banking fraternity would work towards that, strive towards that, and come true to your expectations. At the same time now, I would like to thank Honorable Minister Manjhi ji. वो हमेशा कहते हैं कि छोटे उद्योग को, जो सबसे छोटा है सूक्ष्म उद्योग है, उसको ज़रूर मिलना चाहिए। रोजगार का मुख्य स्रोत है, एक विकास का इंजन है सर। और आपने उदयपुर में भी हमें संदेश दिया था, और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि सिडबी अपनी तरफ से इसमें पूरे कार्यक्रम चलाता रहेगा। हम छोटे छोटे ऋण को भी उसमें आगे बढ़ाते रहेंगे, और जो आपने संदेश दिया कि कागजी कार्रवाई को कम करना है, उसके ऊपर भी हम ज़रूर कार्रवाई, उसके ऊपर भी हम आगे एक्शन लेंगे। Requesting to please bring Honorable Minister Shri Manjhi ji on screen, please. जी, आई थिंक जी 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 मैं साथ ही धन्यवाद देना चाहता हूँ MOS फाइनेंस पंकज चौधरी साहब का, जिन्होंने अफोर्डेबल क्रेडिट की बात करी, कहा कि MSMEs को क्रेडिट अफोर्डेबल होना चाहिए। हम सब बैंक उसमें कार्यरत हैं। कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन हमारी जो है वो जैसे जैसे कम आएगी वो हम ट्रांसफ़र करेंगे लघु इकाइयों को, जैसे रेट कर। फिनटेक्स का रोल उन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया। बेंगलुरु उसका एक गढ़ है जहाँ पर मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ MOS MSME लोकल, आप यहाँ से हैं। एंड मैम, यू टॉक्ड अबाउट skilling and upskilling of employees, and that's a very, very significant thing, because MSMEs, Indian MSMEs are very low at the productivity in comparison to other developed markets. So this is something for a DFI like SIDBI, this could be one of the action points. We should take it, and we'll be certainly working on this particular issue, skilling and upskilling, and produce whatever you produce should be of export quality. This is something very, very significant. So quality has to be important. We take note of that. And I thank our dynamic secretary. He talked about potential of MSME sector, and again he also made a point that MSMEs have to be world class. It's not something, let's not go with the profits of inefficiencies. We have to be world class.
and he is always encouraging ideas. If there are any ideas, innovative ideas to promote MSMEs, so we should take advantage of that, and we could be the channel for that. If there are any innovative ideas, we will take that forward. Honorable FM ma'am, in fact, I should thank you for the trust you have posed in SIDBI, for your compliments. While it makes us so happy to all SIDBIites, but at the same time it puts a lot of responsibility on us, and we assure you we'll do our best to come out every time certain new things, and be a kind of a torch bearer, be the pole bearer for the new products for the MSME sector. And finally, I want to thank MSMEs, Pina and all over the place who are there, who have come from different places, have gathered for this particular gathering, associations, physically and online, honorable MPs, MLA at Shimoga and Vijaypura. I want to thank you also for your presence. You have come to the branches, our branches, and Team Canara Bank for all the cooperation you have extended in this organizing this event, Team Union Bank. And finally, I would like to thank ISC. They made this particular place available to us. Team NIC for the online conduct of the whole event. Team DFS. Without them, this event was not possible. And finally, Team SIDBI. Thank you. Thank you very much. Thank you so much, sir, for your vote of thanks. With this, may I request everyone to please rise for the national anthem. जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Thank you so much, everyone. May I request everyone to please remain seated and leave the aisles open for us as we see off our chief guest and our dignitaries. Thank you so much, ma'am.